So stick around. So stick around. Internet's gone low, so time is for making of it yours. So I'ma sit and just lay in my bed with the frost in my head, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower, mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I'll be lost, I'll be found in the broken, way out in the crowd feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me times two. That one's just me times two. That one's just me times two. I've been crazy, been thinking for too long now. Let it take on the world with two arms now. Got me singing right in the dark, no feelings I couldn't store. Ooh, and I swear I proved all the ways I'm here. Got my drink and trying to get what to do, yeah. I better fake it, yeah, we can work together till we make it. Better take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm about to fake it. Yeah, we can work together till we make it. Better take a life like we're running out of pages. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found home. Stress is getting just a little bit lower, mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I'll be lost, I'll be found in the broken, way out in the crowd feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me times two. So stick around. So stick around.
गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम आपका हो चुका है 12, मतलब 12 बज चुके हैं। और फाइनली हमारी बोलेरो जो है वो पंक्चर हो गया था, बैक वाला टायर। तो फ़िलहाल हमने उसे ठीक कराया है और अब बाकियों की हवा जो है वो चेक हो रही है। और जस्ट निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से एक छोटी सी ट्रिप के लिए, मतलब पास ही की लोकेशन है, वहाँ जाना है हम और मामा जी को। तो आज मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो गुड आफ्टरनून गाइस, फाइनली टाइम आपका हो चुका है, 2 बज चुके हैं दोपहर के। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती, दीदी खाने में व्यस्त हैं, मम्मी खाना रख रही हैं, बड़ी मम्मी। आ रहे हैं। और ये हमारे गांव की किचन यहाँ पर सिंपल वाली। तो फाइनली मट्ठे के आलू बने हैं और तले हुए आलू हैं। और ये मामा श्री हमारे साथ ही में, वो हमारी बोलेरो खड़ी है और साथ में पीछे ट्रैक्टर। तो मामा कैसा लग रहा है? बस तुम इस्माइल ही मारो, कुछ कहोगे नहीं। मार कह रहे यार यार लग गई। बहुत टेस्टी लग रहे हैं मम्मी आलू, और नॉर्मल बिल्कुल सिंपल बने हैं। So stick around. So stick around.